ADRs, and if you are looking at NNT numbers, you will realize what are these adverse drug reactions and numbers needed for treatment. These are common words which are associated when you do research on effectiveness of drugs. So even for metformin, if you give it to 200 people, 1 out of 200 people benefits and it harms 7 people, which means it's a huge gamble. You can also check these numbers for other commonly available consumed medicines as well. Okay. On top of that, initially, this is, I'm quoting a research done in 2012 which is available in Economic Times and Times of India. A diabetic person typically spends 3,000 to 10,000 rupees per month, depending on कि क्या आप दवाई ले रहे हैं या इंसुलिन भी साथ में ले रहे हैं. And as you progress along, जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, this can go as high as 75,000 per year on an average. Okay. It includes your medicine, consulting fee, diagnostic fee, and later on, sudden hospitalization for which you are not ready, and more than that, your body also gets not in a position, it gets into a position where it is very difficult for it to recover. So what is happening with this diabetes? You are earning a lot. What for what? To spending yourself later on in life just to keep yourself alive. Not enjoy life, but just to keep yourself alive. Okay. So in short, what has happened? Some excess sugar level that we are trying to maintain through medicine, through exercise or diet has actually become a stress by itself. And life, therefore, is not being normal for most of the people. Okay. So I have told you a whole lot of problems. I have told you many other aspects of diabetes. So therefore, what is the way out? This is what we teach people in online classes. We teach Kumbhak methods. Now you may have heard of this word. You may not have heard of this word. आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा. कुंभक क्या है? These are breath hold methods to empower your system. अब जैसे ही मैंने breath hold बोला तो हमारे दिमाग में आता अच्छा ये breathing process होगा, breathing exercise होगी. नहीं, ये breathing process, breathing exercise नहीं है, ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम नहीं है. These are breath hold methods. Now ये क्या है breath hold methods? ये हमें बताने के लिए I'll invite Rajiv Ranjan, who's a Kumbhak therapy specialist. He has dedicated his life into understanding human mechanics as to what is our mechanics that gets us into a disease and what is the mechanics that we can use to come out of disease. He has successfully helped people suffering from cancer, people going in for kidney transplants, arthritis, asthma, diabetic, heart patients, and so on and so forth. He is also an author, speaker, and guide to public figures and sports stars. Now I will hand over the screen to Rajiv, who will tell us what Kumbhak is, how we use Kumbhak, and how we can use Kumbhak to use it. Yeah. Rajiv. Namaskar, everybody. Am I audible? सुनाई दे रहा? So I'll talk in English as well as in Hindi, है ना? कुछ लोगों को हिंदी चाहिए, कुछ लोगों को इंग्लिश चाहिए, ऐसा ही है ना? So I'll talk alternatively in English as well as in Hindi. But if you'll be with me for the next 10 minutes, अगर 10 मिनट तक मेरे साथ में रहें, तो आपको पता चल जाएगा what is diabetes और इससे कैसे निकला जाता है. So you'll get a completely new perspective. आपको एक नया नजरिया मिलने वाला है, इसीलिए अपने को सेटल डाउन कर लें और जरा ध्यान से सुनें. ठीक है ना? अपना पूरा लॉजिक लगा लीजिए, अपनी जितनी समझ है सब लगा लीजिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं. ठीक है? तो शुरू करते हैं. आपने खाना खाया, you ate something, it got into your system, it got digested, ये digest हो गया, फिर ये शुगर में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया. What is glucose? It is a very important aspect of your energy. आपकी ऊर्जा का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पक्ष है. ये आपके ब्लड में भी जा गया,
ग्लूकोज बन के, इट केम इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, बट वहां से आगे नहीं जा रहा। इतनी बात समझ में आ रही है? दिस मच यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके ब्लड में आ गया ग्लूकोज, बट उससे आगे नहीं जा रहा। तो कहां जाना है इसको? वेयर हैज इट टू गो? वेयर इट नीड्स टू गो। कहां जाना है? आपके सेल्स में जाना है। आपके बहुत सारे सेल्स हैं पूरे शरीर में, उसमें जाना है ना। तो वहां पे इसको एक्सचेंज होना है, सेल्स के साथ एक्सचेंज होना है। क्यों एक्सचेंज होना? क्योंकि दिस ग्लूकोज विल बी यूज्ड बाय समथिंग कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। आपके सेल के अंदर है ना, आप कोशिकाओं के अंदर एक चीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो ऊर्जा पैदा करेगा इसकी मदद से, जिससे आप कुछ भी करेंगे। आप कोई भी एक्शन करते हैं, वट एवर एक्शन यू डू, यू नीड एनर्जी। तो कोरिलेट करेंगे। क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी वीक हो गया, नहीं हो पा रहा प्रॉपरली। द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी और समथिंग रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, जो चीज जरूरी है एनर्जी के लिए, वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वीक हो गया, नहीं हो पा रहा। सो एनर्जी का एक्सचेंज वीक हो गया। लेट अस कोरिलेट विद सिम्टम। यहीं पे रुक के थोड़ा सा अपने सिम्टम के साथ में क्या परेशानी आती है उसके साथ में कोरिलेट कर। व्हाट हैपेंस? यू फील फटीग। आप थक जाते हैं ना, थक जाते हैं। पहले नहीं थकते थे, अब थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? व्हाई यू बिकम फटीग्ड? व्हाई लैक ऑफ एनर्जी? कम एनर्जी क्यों आ रही है? क्योंकि वो एक्सचेंज मैकेनिज्म नहीं है। तो एनर्जी जहां प्रोड्यूस होनी थी वहां नहीं हो पा रही, मिल नहीं पा रहा। तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म और द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हैज गॉट लेस स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ वीक हो गया, इट हैज बिकम वीक। तो वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, जहां पे जरूरी है, आपको एनर्जी नहीं मिल पा रही। फिर क्या हो रहा है? रात में सो नहीं पा रहे। ज्यादातर डायबिटिक लोगों के साथ में ये होता है। यू गेट इनटू इनसोम्निक कंडीशन, दैट मींस इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इनटू स्लीप। व्हाई? क्योंकि व्हाई? बिकॉज एट द टाइम ऑफ स्लीप योर होल मेटाबॉलिज्म हैज टू कम डाउन। आपका पूरा एनर्जी जो है ना लो होना चाहिए, तभी आप सो पाओगे, वरना नहीं सो पाओगे। योर मेटाबॉलिज्म हैज टू गो डाउन, है ना। पर आपके ब्लड में तो शुगर ज्यादा है। बॉडी इंडिकेट क्या कर रही है अपने आप को? यार ये कोई अच्छा सिचुएशन नहीं है, इट्स अ हाई शुगर इन द ब्लड, यानी कोई और प्रॉब्लम है, काम करना है। व्हाट डज दिस बॉडी गेट? कि दिस इज नॉट द टाइम टू रेस्ट। तो क्या हुआ? जो एक्सचेंज मैकेनिज्म है वो वीक है। जब चाहिए तब नहीं मिल पा रहा। when it is required you are not getting the energy, when it is not required it is not able to load down the energy. तो उसका स्ट्रेंथ कहीं वीक हो गया, द वे इट हैज टू फंक्शन, वो स्ट्रेंथ कहीं वीक हो गया। देन व्हाट एल्स? और दूसरे सिम्टम देखते हैं। लेट्स सी अदर सिम्टम्स। ऑर्गन फेलियर। नाउ देयर इज न्यूरो सिस्टम आल्सो, है ना। न्यूरो सिस्टम नर्व सेल से काम करता है। नर्व सेल्स, हाउ डज नर्व सेल्स और एनी सेल वर्क और एनी ऑर्गन वर्क? कैसे काम करता है? उनको एनर्जी चाहिए, दे नीड एनर्जी। उनको वो एनर्जी मिल नहीं पा रहा। व्हाई? क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी का स्ट्रेंथ जो है वीक है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी वीक हो गया, तो वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रहा। तो क्या होगा? न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, ऑर्गन फेलियर, किडनी काम करना कम कर देगा, हार्ट फंक्शन पे इंपैक्ट आएगा, लिवर फंक्शन पे इंपैक्ट आएगा। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज ऑर्गन फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सप्लाई। तो ये जो सप्लाई का मैकेनिज्म है, द ट्रांसपोर्ट और द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ये वीक हो गया। एंड यू कैन कोरिलेटेड विद अदर सिम्टम। और जो भी आपको सिम्टम आए ना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको मालूम है मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ दे हैव स्टार्टेड 22 भी आ गया तो यू फील अनकंफर्टेबल, 22 डिग्री एंड यू फील अनकंफर्टेबल, योर बॉडी बिकम्स कोल्ड इजिली।
your body becomes cold easily. When the body becomes cold, you will suffer frequent urination. In the cold season, ठंड के टाइम पे होता है ऐसा, बार बार यूरिन, क्योंकि बॉडी हैज बिकम कोल्ड, इट नीड्स एनर्जी, इट नीड्स टू हीट इटसेल्फ अप. ये गर्म करना होता है इसको, वो गर्म नहीं कर पा रहा. व्हाई? टू हीट इट अप. इसको गर्म करने के लिए यू नीड एनर्जी, वो नहीं मिल पा रहा है ना. सो डू यू थिंक योर डाइजेशन विल बी गुड? क्या आपका डाइजेशन सही रहेगा? बिकॉज बॉडी हैज टू हीट इटसेल्फ अप. गर्म करना होता है टू डाइजेस्ट फूड. दिस इज नोन एज जठर अग्नि. सो इफ यू कोरिलेट अपने सारे सिम्टम के साथ में इसको देखिए, एनर्जी एक्सचेंज का स्ट्रेंथ वीक हो गया. द स्ट्रेंथ ऑफ एनर्जी एक्सचेंज हैज गॉन डाउन. राइट? यहां पे रुकते हैं जरा, यहां पे रुकते हैं. लेट्स सी, आगे देखते हैं. लेट्स सी, थोड़ा सा आगे देखते हैं. इसको हम ठीक कैसे करते हैं? हाउ डू वी करेक्ट इट? सपोज कीजिए, जस्ट थिंक अबाउट दिस, इवन योर पैनक्रियाज इज नॉट फंक्शनिंग. वो इंसुलिन रिलीज नहीं कर पा रहा है ना, इंसुलिन रिलीज नहीं कर पा रहा. नाउ इंसुलिन रिलीज नहीं कर पा रहा, कैन वी रिवाइव इट? कैन वी रिवाइव इट? क्या उसको रिवाइव किया जा सकता है? क्या उसको रिवाइव किया जा सकता है? वन ऑफ द पर्सन, प्लीज वी विल आंसर दिस क्वेश्चन लेटर ऑन ना, आप अपना रखिए, विल आंसर दिस क्वेश्चन लेटर ऑन. इवन सिग्नलिंग हैपेंस बिकॉज there is certain energy in a system. Without energy, signaling also doesn't happen. So pancreas, can we revive pancreas? अगर आप मान के चले pancreas insulin नहीं निकाला, it's not releasing insulin, can we revive pancreas? So reviving pancreas would be a solution. क्या आप pancreas revive कर रहे हैं? Okay, new medical research, नए medical research कहते हैं every organ has stem cells. Stem cells होता हर एक organ के अंदर, जो कि जरूरत पड़ने पे whenever it is required, it can actually revive the organ. आप थोड़ा गूगल कीजिए, थोड़ा नए रिसर्च पे जाइए. एवरी ऑर्गन हैज स्टेम सेल्स. इट नीड्स राइट ट्रिगर. उसको क्या चाहिए? उसको टैपिंग अप चाहिए, उसको राइट ट्रिगर चाहिए रिवाइव होने के लिए. ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे. हम मेडिसिन ले रहे हैं. डू यू थिंक मेडिसिन रिवाइव्स पैनक्रियास? नो. तो लेट्स सी, हम ग्लूकोज को डाउन करते हैं, उसमें कर क्या रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग बेसिकली? हाउ मेडिसिन वर्क? मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन हो, कैसे काम करता है? लॉक एंड की प्रिंसिपल, रिसेप्टर प्रिंसिपल, लॉक एंड की प्रिंसिपल. आपके पूरे शरीर के अंदर रिसेप्टर्स हैं, ये मेडिसिन उन रिसेप्टर्स पे जाके बैठ जाते हैं. ईदर इट इंक्रीजेस अ पाथवे, एक पाथवे को थोड़ा सा जबरदस्ती ऑन कर देता है या रोक देता. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑल मेडिसिन. फर्स्ट क्वेश्चन, is your body designed for this? So general knowledge question for everybody. कौन से साइंटिस्ट ने इस बॉडी को डिजाइन किया? GK question for everybody. Which scientist designed this body? No scientist designed this body. Nature designed this body. है ना? So this body is made for natural feed and natural trigger. जरा ध्यान में पकड़िए, इसी से आपको सॉल्यूशन मिलेगा. नेचुरल फीड और नेचुरल ट्रिगर. एनीथिंग विच इज अननेचुरल, ये बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है. आप डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल के चलाइए, कितना चला पाएंगे? ये तो हम इतना तो समझते हैं. सो इफ दिस बॉडी इज नॉट डिजाइन्ड फॉर अननेचुरल थिंग्स एंड यू वांट टू क्रिएट अ सिचुएशन where you forcefully make this body do something, आप जबरदस्ती जुगाड़बाजी करके कुछ करवा दें इस बॉडी के साथ में, कितने समय तक झेलेगा? हाउ मच टाइम विल इट सफर दैट? सो आपने दवाई खा ली एंड इट वेंट ऑन द रिसेप्टर्स, उसमें बैठ गया और एक पाथवे ऑन कर दिया. बॉडी फिर इसको खत्म कर देती है ना, वापस निकालने की कोशिश करती है, बिकॉज दिस इज नॉट नेचुरल. Then you have to again take a medicine. तो आपने अच्छा जुगाड़ कर लिया.
बट हाउ मच दिस बॉडी विल टॉलरेट दैट। तो आपके डोजेज बढ़ते जाते हैं इसीलिए, एंड देन आफ्टर सम टाइम दिस बॉडी गिव्स अप। तो क्या वो तरीका है मेटाबॉलिज्म को करेक्ट कर रहे हैं आप? क्या पैनक्रियास रिवाइव कर रहे हैं या मेटाबॉलिज्म को करेक्ट कर रहे हैं? स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं? क्या एक्सचेंज का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं दवाई लेके? नहीं। लेट्स कम टू सेकंड थिंग, हम कैसे इसको कम कर सकते हैं? आप ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट कम ले लें डाइट में, है ना, अपना फूड चेंज कर दें, अपना डाइट चेंज कर दें, कार्बोहाइड्रेट लेस कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फिर एनर्जी में नहीं चेंज होगा, तो आपके ब्लड शुगर में ग्लूकोज कम आ जाएगा। नो, क्या इससे आर यू रियली रिवाइविंग द मेटाबॉलिज्म? स्ट्रेंथन कर रहे हो एक्सचेंज को आप इससे? आर यू डूइंग दैट? नहीं। So is it not good? Yes, it is good. Get your diet to natural. वो बहुत अच्छा है, लेस कार्बोहाइड्रेट करेंगे, इट इज गुड। ठीक है, आपको ब्लड शुगर लेवल एक लेवल पे चाहिए तो आप उसको कर सकते हैं, बट इज इट, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, इज इट अ सोल्यूशन? क्या आप एक्सचेंज मैकेनिज्म का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं? क्या आप ऑर्गन को रिवाइव कर रहे हैं? क्या आप मेटाबॉलिज्म को स्ट्रेंथन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। आप उसको सप्लाई कम कर रहे हैं, राइट? So what is the other thing that you do? तीसरी चीज आप क्या करते हैं? मेडिसिन हो गया, मेडिसिन happened, diet happened. What is the third thing that you do? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आप करते क्या है? आप अंदर से पुश बनाते हैं, रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं कि आई नीड लॉट ऑफ एनर्जी, सो अब्जॉर्प्शन आ जाए, अब थोड़ा अब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। तो इफ यू जनरेट अ रिक्वायरमेंट, उससे भी अब्जॉर्प्शन थोड़ा बढ़ता है। बट वेयर डू यू जनरेट द रिक्वायरमेंट? कहां पे जनरेट करते हैं रिक्वायरमेंट? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे करते हैं, है ना। मस्कुलो, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी फिजिकलिटी काम करती है ना। क्या आपके ऑर्गन फंक्शनिंग भी इससे स्ट्रेंथन होते हैं? हाँ, इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता ही है। यू गेट एन इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑन योर ऑर्गन सिस्टम फंक्शनिंग या फंक्शनल सिस्टम, बट नॉट अ डायरेक्ट इंपैक्ट। तो इनडायरेक्ट इंपैक्ट में इट इज हेल्पफुल, बट कैन वी कॉल इट अ कंप्लीट सोल्यूशन? तो वहां पे थोड़ा सा है कि इट कैन नॉट बी कंप्लीट सोल्यूशन अनलेस एंड अनटिल वी आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट। एक अगर फंक्शनल एस्पेक्ट को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं तब वो कंप्लीट सोल्यूशन होगा। So that is why you will see कि sports people also get into diabetic condition. वो तो बहुत काम कर रहे हैं, बट स्पोर्ट्स के लोगों को भी डायबिटीज हो। तो कहने का मतलब वट एवर सोल्यूशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर एक्सरसाइज, जो हम कर रहे हैं एक्चुअली उसमें से जो पहला था मेडिसिन, इट एंड्स अप हार्मिंग द होल ह्यूमैनिटी, क्योंकि इट इज अननेचुरल epigenetic trigger. Every day you are creating an unnatural epigenetic trigger in your body. 700% डायबिटीज बढ़ गई पिछले 50 सालों में, ज्यादा शायद ज्यादा इससे। डू यू थिंक दवाइयों की वजह से हमने डायबिटीज ठीक कर लिया? नहीं कर पाए। समवेयर वी विल हैव टू थिंक कि दिस अननेचुरल वे ऑफ कंट्रोलिंग योर बॉडी, इज इट राइट? इज इट हेल्पिंग ह्यूमैनिटी इन रियल? So anything unnatural you are taking inside the body, this body is not designed for that. ये शरीर उसके लिए डिजाइन नहीं किया गया। It will create an unnatural epigenetic trigger. तो आपके केवल डायबिटीज नहीं, कैंसर जैसी चीजें भी बढ़ने लग जाएंगी। This is what has happened. आप देखेंगे, जस्ट ऑब्जर्व, डेटा देखिए ना, ऑब्जर्व करें डेटा को, कितनी बीमारियां बढ़ रही। तो सोल्यूशन, लेट्स कम टू सोल्यूशन। क्या, व्हाट इज द सोल्यूशन? ऑर्गन रिवाइवल एंड स्ट्रेंथनिंग द मेटाबॉलिक सिस्टम और एनर्जी एक्सचेंज मैकेनिज्म, उसको स्ट्रेंथन करना है। सो लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म और नेचुरल ट्रिगर। नेचुरल ट्रिगर मैंने क्या बताया था? नेचुरल फीड एंड नेचुरल ट्रिगर, ये दो चीज के लिए बॉडी डिजाइन है। तो लेट्स सी, मैं डेमो कर रहा हूं और आप लोग भी साथ में करोगे। डोंट आस्क मी कि बाद में डेमो नहीं दिया, ठीक है? टेक वन हैंड, एक फेस लो, जोर लगाओ, कितना एफर्ट लगा सकते हो लगाओ। हाउ डू यू क्रिएट दिस एफर्ट? हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ? जोर लगाओ, जोर लगाओ। हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ? जस्ट लुक बैक बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। इज इट? यही हो रहा है। हाउ यू क्रिएटिंग दिस स्ट्रेंथ? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। द मोर स्ट्रेंथ यू वांट टू क्रिएट, द मोर होल्ड, उतना ही होल्ड करना पड़ेगा आपको। इज दिस? ऐसा ही है, सभी ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है ना? सो द एवरी मॉर्निंग यू गेट अप, आप अंगड़ाई लेते हैं। हाउ डू यू डू दैट?
आप सांस भरते हैं एंड टेंस योर बॉडी. मॉर्निंग यू डू दैट. आपने क्या किया, सांस को रोक के स्ट्रेंथ क्रिएट किया बॉडी में स्ट्रेंथ क्रिएट किया. यू वांट टू लिफ्ट अ वेट. आप एक वेट लिफ्ट करना चाहते हैं. हाउ डू यू लिफ्ट अ वेट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. आप सांस रोक के उठाते हैं भारी सामान. आप किसी को धक्का देना चाहते हैं. हाउ डू यू पुश? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. किसी को खींचना चाहते हैं, पुल का कैसे स्ट्रेंथ जनरेट किया आपने? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम समबडी. कोई आपको हिट कर रहा है, आपको अपने आप को बचाना है. व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? आप सांस रोक लेते हैं, टाइट करते हैं शरीर को. आप सांस रोकते हैं. आप ऊपर जंप लगाना है. क्या कैसे लगाएंगे जंप? यू होल्ड योर ब्रेथ एंड क्रिएट दैट स्ट्रेंथ. तो फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट करते हैं? हाउ डू यू क्रिएट फिजिकल स्ट्रेंथ? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. ये होल्ड ऑफ ब्रेथ इज अ नेचुरल ट्रिगर इनसाइड यू. आप लोगों में से कई लोग राइट हैंड से लिखते हैं. यू राइट विथ योर राइट हैंड, है ना? क्यों, कैसे कर लिया वो राइट हैंड से लिखने का? किसने बताया आपको? यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. आपने राइट हैंड से लिखना शुरू किया और राइट हैंड में आपकी बॉडी ने स्ट्रेंथ बढ़ा दिया. तो आपने होल्ड किया, कोशिश की. हाँ, आपने एफर्ट कैसे किया? कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोपोर्शन में ब्रेथ होल्ड करके आपने एफर्ट किया और उसको डायरेक्ट क्या किया? राइट हैंड से. एक फुटबॉलर फुटबॉल किक करता है राइट लेग से, तो वो स्ट्रेंथ राइट लेग में, वो जो कुंभक है, कुंभक क्या है? ब्रेथ होल्ड. वो कुंभक को राइट लेग की तरफ डायरेक्ट करता, तो राइट लेग उसका स्ट्रांग बन जाता है. राइट लेग बिकम्स स्ट्रांग, so he becomes a right leg player, right foot player. So this is natural trigger. Whatever you want to strengthen, if you direct your breath hold towards it, that part, वो part strength आ जाएगा उसके अंदर. करें, एक right hand अपना उठाएं and make a face, tense, tight करें, just tense your right hand. And how do you tense it? कहीं ना कहीं आपको, you have to hold your breath, but you are holding your breath and directing it towards your right hand. If you do this continuously for a long period of time, आपके इस हाथ में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. Isn't it very natural? आप यही ट्रिगर, you can use this trigger in a different way. You can hold a very heavy object. जिम करते हैं, वेट एक्सरसाइज करते हैं, उसमें क्या हुआ? एक हाथ से कीजिए, वो हाथ स्ट्रांग हो जाएगा. बट वो करेंगे कैसे? हाउ डू यू लिफ्ट द वेट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट पैटर्न, इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन, एंड योर राइट हैंड विल बिकम स्ट्रांग. सो फिजिकल स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म इज कुंभक. कुंभक मीन्स व्हाट? ब्रेथ होल्ड. यू जस्ट हैव टू डायरेक्ट इट. आपको एक तरफ में इसको ले जाना है. नाउ लेट्स थिंक अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ. कैसे किया? हाउ डू यू क्रिएट मेंटल स्ट्रेंथ? हाउ डू यू क्रिएट मेंटल स्ट्रेंथ? अपने आसपास में कोई भी पॉइंट है, जस्ट फोकस ऑन दैट पॉइंट वेरी इंटेंसली. कोई भी पॉइंट आपके आसपास में, फोकस ऑन दैट पॉइंट. एग्जैक्टली ट्राई टू लुक एट द पॉइंट वेरी इंटेंसली. व्हाट हैपेंस? यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ. बिना सांस रोके तो आप फोकस ही नहीं कर पाते. नाउ फोकस क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी, वॉट एवर तंत्र यू यूज, if you have not taken training of breath hold, nahi hoga kaam boss. So how do you create mental strength? By holding your focus, by holding your breath. Kumbhak. So Kumbhak is a mechanism to create physical strength. Kumbhak is the mechanism to create mental strength. Now here comes the magic. आपके बॉडी में देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस हैपनिंग इन योर बॉडी. लॉट ऑफ फंक्शंस हैपनिंग. लिवर फंक्शन, हार्ट फंक्शन, किडनी फंक्शन, न्यूरो फंक्शन, लंग फंक्शन, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, सो मेनी डिफरेंट फंक्शंस, है ना? आपके बॉडी के अंदर हो रहा है. आर यू डूइंग इट? यू आर नॉट डूइंग इट. इट इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन. बट यू कैन, इफ यू हैव टू, इफ देयर इज सम फंक्शन व्हिच हैज गॉन वीक, आपके अंदर एक फंक्शन वीक हो गया, आप उसको स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हैं? हाउ कैन यू स्ट्रेंथन दैट एस्पेक्ट? नाउ होल्डिंग योर ब्रेथ इज द ओनली ट्रिगर, नेचुरल ट्रिगर अवेलेबल टू यू.
There is no other natural trigger available to you. Only holding your breath is the trigger, natural trigger available to you. And if you hold your breath for a particular interval, एक समय सीमा तक अगर आप सांस रोकें, एक तरीके से रोकें, so you can direct your hold towards the liver. दूसरे तरीके से you can direct, आप उस होल्ड को, कुंभक को किडनी की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं, हार्ट की तरफ, लंग्स की तरफ, मेटाबॉलिज्म की तरफ, एनर्जी एक्सचेंज की तरफ. तो आप बताने वाले हैं how you can hold your breath, in what way you can hold your breath so that strengthen the energy exchange mechanism in your body. You can also revive your pancreas if you direct it towards the pancreas. अगर pancreas की तरफ में breath hold कुंभक को direct करें, so you can even revive your pancreas. The time period will vary for various people, depending upon आपने अपने मैकेनिज्म को शरीर को कितना वीक कर दिया. Depending upon that, वो टाइम पीरियड वेरी करेगा, but it is 100% sure because this is the only natural trigger available to you and you have been using it from your childhood. बचपन से आप यूज कर रहे हैं अनजाने में, आपको मालूम ही नहीं. This is the only natural trigger available to you to reverse whatever you want, to create physical strength, any kind of physical strength, to create mental strength and to create functional strength. बस आपको सीखना पड़ेगा कैसे. यही हम सिखा रहे हैं. Is it unnatural? Is it something that we are giving to you? ऊपर से कुछ डाल रहे हैं? No, आप खुद करेंगे क्योंकि ये आपका अपना इनबिल्ट मैकेनिज्म है. क्या ये करना सही काम है? इसके अलावा बता दीजिए कोई और काम सही है तो. Only a natural trigger doesn't harm you. वो रिवाइव कर लेती है बॉडी, वो हार्म नहीं करता. अननेचुरल ट्रिगर आप डालेंगे ना, गोलियां डाल रहे हैं रोज के रोज, अननेचुरल ट्रिगर, ये शरीर के लिए खतरा है. दिस बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर मेडिसिन. तो अननेचुरल ट्रिगर सही नहीं है. क्या उसकी जरूरत है? हाँ, कभी सपोर्ट लेने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते. यू कैन यूज मेडिसिन ऑल्सो. आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट. अगर वो कुछ चीज निकल के आई है, समटाइम्स इट बिकम्स टू, आप उसको संभाल नहीं पा रहे, at that time you can use it to lower down, but lowering down, taking medicine throughout your life, जिंदगी भर दवाई से उसको कंट्रोल करके रखें, क्या अगर मैं एक शब्द बोलूं फूलिशनेस नहीं है ये? तो कहने का मतलब ये, उसको जब जरूरत है हम यूज कर सकते हैं. डाइट प्लान भी अच्छी चीज है. आप डाइट प्लान ले, बहुत अच्छी चीज है, सपोर्टिव फॉर योर बॉडी, आपके लिए बहुत अच्छा. एक्सरसाइज करें, वेरी गुड, बहुत अच्छा. But is there something which gives you hope? वो आपके जो स्ट्रेंथ वीक हो गया उसको बढ़ा दे. You can become like normal before, जैसा आप पहले यंग एज में थे वैसे हो जाए. क्या कोई ऐसी चीज है? तो क्या उसको करना नहीं चाहिए आपको? कुंभक is that method which can completely get you to the yesteryears. वो यंग एज में वापस आपका ला सकता, जहां आपका मेटाबॉलिज्म वापस से उतना स्ट्रेंथ का बन जाए. ये पॉसिबिलिटी है, कुंभक के साथ में है. इसलिए कह रहे हैं डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट एक चीज तो ऐसा प्लीज कीजिए जिससे आप उसको रिवाइव कर सकें. दैट यू शुड डू. ये अपना एक चीज अपने जीवन में रखिए जहां से कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट रिवाइवल. तो आई थिंक आई विल हैंड ओवर द डायस टू नवनीत जी. आगे वो बताएंगे. So I will now tell you about how you can learn कुंभक. जैसे हमने पहले बोला कि आप ऑनलाइन सेशंस क्लासेस में सीख सकते हैं. So I'll give a little information about that, how you can learn कुंभक. Okay. Now these are online courses, which means आप अपने घर से अटेंड कर सकते हैं. आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है. You need a internet connection and yes, familiarity with using a bit of your phones and desktop applications. So how will you learn it? When you learn it in the class, you will learn it as a 30-minute module. आप इसको यूज कैसे करेंगे? 20 minutes in the morning and 10 minutes in the evening.
आई एम श्योर हर कोई जो भी डायबिटीज से बाहर आना चाहता है वो अपने लिए सुबह 20 मिनट और 10 मिनट निकाल सकता है। ये कुछ ज्यादा नहीं है। और ये जो आपको प्रैक्टिस सिखाई जाएंगी, दीज विल बी टॉट इन 3 क्लासेस ऑफ 1.5 hours each over 3 weeks, which means 1 class per week. If me to give you an example, if the first class is tomorrow, which is a Friday, then the next class will be on next Friday and the Friday after that. So now this is what the beauty of coming to this particular course is that whatever practices you learn, eventually they are not the same for everyone. Why? Because हर किसी का system अलग होता है, हर किसी का functioning अलग होता है. So we have a unique diagnosis called Pran Shakti diagnosis. These are simple 7 questions that you can answer online. What are these questions about? These are questions about you, how your system is, how you work in life. So therefore it helps us understand exactly how your system behaves. Now once we know that, we can get to the root cause of what is causing diabetes in you. Okay, what is causing the lack of functioning or the functional strength inside you. Once we know the root cause, अगर हमें जड़ पता चल गई, इसका मतलब we can have a road map for a person to do something about it rather than just हवा में तीर मारते जाएं. ये जो डायग्नोसिस होता है, इसके लिए इसका मेन फायदा ये होता है, एक तो आपका सिस्टम के बारे में पता चलता है. सेकेंडली, these findings are used to customize Kumbhak practices for every individual who comes into the program. So it is not all same practices for everyone. There are preparatory sessions and then these are customized for everyone. Now, what are the advantages of learning Kumbhak practices? You can get permanent solutions, okay, because it is directed at, it is a natural trigger directed at body's intelligence. You don't need to depend on diet, exercise and medicine later on, once you are out of this condition. And this is nice that anyone, any age can do it. You can do it anywhere, on a bus, on a bed, on the floor, on a chair, on a sofa, even while you're traveling, on a plane, on a train, on a bus, even in a car, as long as आप गाड़ी खुद ना चला रहे हो, because that is not advisable. प्लस इसके साथ साथ और क्या होता है कि अभी बहुत सारी चीजें जो माइनर लगती हैं, whether these are digestive issues, whether these are body ache issues, etc., those are also taken care of thanks to the diagnosis and thanks to the Kumbhak practices. Okay, now this is where we go back to the slide number 1, 42-day challenge. Are you willing to work upon yourself? Are you willing to make some effort? क्या आप उतनी थोड़े effort, मेहनत लगाने को तैयार हैं? क्या आप अगले 42 दिनों में, अगले 42 यानी जब आप अपना इंडिविजुअल मॉड्यूल सीख लेते हैं, उसके बाद आप मेडिसिन से बाहर आने के लिए तैयार हैं? बिकॉज जब तक आप मेडिसिन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आपके बॉडी को नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा अपने आप को ठीक करने के लिए. So therefore you will be able to come out of this with customized Kumbhak modules and integrated lifestyle transformation tools. Okay. So what is the duration of this course? The duration of engagement is 3 months, which means you will have 3 classes over 3 weeks, then 1 individual session, और उसके बाद 2 or 3 follow-up sessions, which are part of monitoring your system, maybe revising, making changes according to how your system behaves, etc. You will get your unique diagnosis, you will get customized models, and through the course, you will get support. What else will you get in the course? You will get unique diet perspective. Now, please mind my words. मेरे words को, मेरे शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए. मैं diet plan नहीं बोल रहा हूँ, perspective बोल रहा हूँ. आपको diet के बारे में एक नजरिया आएगा, ताकि आप ही decide करें कि आप अपने system के हिसाब से क्या खाना चाहते हैं, कब खाना चाहते हैं. Okay? इसके साथ में आपको मिलेंगे मेंटल और इमोशनल ट्रेनिंग, बिकॉज ये दोनों भी बहुत जरूरी है किसी भी क्रॉनिक एलिमेंट से बाहर आने के लिए या लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए. आपके बॉडी में डिटॉक्स की जरूरत है, तो आपको सिंपल डिटॉक्स प्रोसेसेस बताए जाएंगे, घर पे ही कर सकते हैं. यू विल हैव एक्सेस टू ऑल क्लास वीडियोस एंड मटेरियल्स. यू विल हैव टाइमली आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस, एंड ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड अर्लियर, मेथड टू हैंडल रिलेटेड कंडीशंस. नाउ, सो व्हाट इज the cost of this program? The cost of this program is 4,999, 4,999. This is a discounted rate over 16,000. You attend, you pay online. The payment link will be shared to you through either the WhatsApp group or
However, you have been contacted. We have your numbers. We have your email. So the payment links will be shared with you, especially with people who are interested. And you can start attending online classes. You will get class material. You will get written instructions and after class support for 3 months. So when is this starting? This program starts on Saturday, 6 June, 5 p.m. in the evening. Okay, I've told you about the course now. I will stop the share and let's see if we have any. Yes, there is a doubt clearing session now after that. Yeah. You can go ahead and ask your questions. Some time back, there was one question. Is Panchakarma advised along with Kumbhak? This is from Gauri ji. Panchakarma you can do on your own. It is not required along with Kumbhak. Okay. Does stem cell transplant in diabetes type 2? I think we are not going to do stem cell transplant. Please check with medical professionals if that is possible or not. How does nerve signaling and neurotransmitter enzymes play a role in neurosignaling? How is it related to glucose molecules? See, there are certain, till you are alive, this signaling happens. So there is a certain correlation with it. If you can't find a direct correlation, but there is an indirect correlation with it. This signaling actually ceases down as the person dies after some time. Why it happens? Why it happens? Because even if it is not directly related to that, but is indirectly related to that. Even the nervous cell functioning happens because of energy. So don't you think signaling has something to do with its functioning? If not directly, then there is an indirect relation with it. So that's what I said, when every cell requires energy to function, primarily requires energy to function, and then do their proper or specific functioning. तो पहले तो जिंदा रहना है ना, उसके बाद ही कुछ और आगे आप कर सकते हैं. तो उस सेंस में उसकी जरूरत है. There is Kamlesh Kayas is saying, even though I have blood pressure, can I do Kumbhak? Yes, you can, sir. Many people in the program who come with diabetes as primary condition, and they also are accompanied with blood pressure. So that is taken care of in the individual diagnosis and what you call customization, and they benefit from it. 42 days program Kumbhak will lower how much HB1AC? It depends from system to system. I can tell you two incidents that when initially the person's HB1AC was about 7.5 and it had been there for years. After doing Kumbhak, it came down to 5.6. Okay. How many people have reversed the diabetes? Is it really possible? Yes, people have been reversing diabetes, and it is really possible. Let me share a bit of data for people who want to see some kind of proof for this. Can heart patients do Kumbhak? Yes, you can. Once again, once you come into the program, all these accompanying conditions will be taken care of. Let me share a bit of data with you about how many people, how people have benefited from it. Just give me a moment. I'll just again use a screen share. Okay. Now, if you look at it, on my right is Victor Bischoff. He's 65 from France. Okay. He's been out of his medicine for more than 3 months using Kumbhak practices only. He dropped his medicine. He's out of his medicine. Santosh Bansal, he attained normal readings within 1 month and he's been out of medicine for 4 months. Devinder Botre was suffering from diabetes and BP. Now, his medicine levels are down to minimum about 5%, but his readings are normal. But because we are monitoring still, and we taper down medicine, so that is how it has happened. Rakhi Bambani from Mumbai, again 58. She's been asthmatic since childhood and was on steroid, therefore even lost
one of her kidneys. So in February, when she joined the course, her daily average was 193.5. By March, it was down to 112. Okay. Let me take you down to more stories. Nirmala Sridhar, 53, Mumbai. One of the first things before her sugar levels were discussed, she climbed 6 stories of stairs. She had to because उस building में lift काम नहीं कर रही थी, and she reported immediately that I did not feel breathless. After that, I thought her diabetic problem seemed a little small, because at 53, somebody could climb 6 stories of a building without feeling breathless. And she is in Mumbai, except for the lockdown period. She travels, climbs over bridges, etc. And she does that effortlessly. At 28 in January, her fasting and PP were 2002 and 296. In March, from 13 to 24, they hovered around because she was doing Kumbhak at 188 and through 33. But she kept on doing Kumbhak, kept on doing Kumbhak. Now, these are recordings from May 25th onwards: 99, 138, 104, 158, 86, 128. And she is even dropping her medicines. Punita Mehta, again, she came into a course just for trying, okay, let me see, because she had tried yoga and everything earlier, gym, etc. So she started. In the beginning, she was not regular, but somewhere in March, she realized that, her sugar levels were very high, and she was on medicine, which she was also taking on and off. So her levels were at 2005, and post-lunch was 356. Now, her medicine was changed, but thanks to lockdown, her medicine were out of her reach. She could not take those medicine, but she continued her practice. Now, this is in May 2020, some time back, last week itself, she reported without medicine results: 108 pp, 94 lunch, okay, 128 and 132. This is again, if you are able to see on your screens, this is another case who joined the course in April 7, 2020. Before practice, levels were 264, 204, 239. After practice in April onwards till May, they've all been, I'm talking of morning, 164, 116, 111, 113, 102, all right, 118, 120. And even before sleep, they have been 143, 180, 184, 154, 164. On top of that, many people are worried about, are concerned about what you call weight loss. Here is fantastic stories about Rishi Mehta, who lost 2.5 kgs in 2 months, Enawala 3 kg in 1 month, Tapti Sengupta 4 kg in 2 months, Rakesh Kumar 5 kg 2 months, Vinay Mysore 1.5 kg in 1 week, and Atul Ajmera has lost 8 kgs over 3 weeks. And he's also got rid of his sleep problems. Now he sleeps at 10, wakes up fresh every morning. Okay. So these are some of the advantages that I have shared with you, and this should give you the confidence why you can come into the program. Yeah. Do you have any other time, sir? Do I have any other time? Because we are business people at 5 o'clock. Sir, the class is once in a month, once in a week. So okay, for 3 weeks, if I'm sure everyone, whether you're business or doing a service, you can take time out for yourself just once in a week. After that, you can, do the practice at your convenience. It is 5 to 6:30, yeah? Yeah, yeah. That's what we've been announcing, yeah. Okay, thank you. Yeah, so it's once in a week for people who think, I'll not be able to attend it regularly. It is not an everyday class. We will teach you well so that you can do your practices, and we'll support you throughout. I can understand in the business, there'll be a lot of disturbances. That is the issue. Sir, one day, this thing, you tell me what is more important. If you are not well, how will you run your business? Yeah, don't you want to run your business with a no retirement plan? No? So if you do your practices, you can run your business, and I'm sure help others run their businesses as well. Okay. Yeah. Plus, there would be recorded sessions also. Yes. See, whatever all the classes that are conducted, we record the sessions, and those recordings are shared with participants only. They are not available in public domain. Is it one-to-one training? 3 classes are preparatory, then it is one-to-one session. Okay. Somebody said, answer my question. What is Manali Vora's question?
Ma'am, can you unmute yourself and go? Are these courses to learn Kumbhak for doctors? No. These courses are people who are suffering from diabetes. And if you're a doctor, if you want to check something else out to get rid of, come out of diabetes, you're most welcome to attend the program. Yeah. Manali ji was asking, sir, how does Kumbhak work on gestation diabetes and how well does it work for the probabilities of inheritance of diabetes? Okay. Rajiv? Probability of inheritance of diabetes. Have you got diabetes from the birth or by birth? If you have developed diabetes later on, that means there was a weakness which actually you didn't work upon it to make it a strength, and that happened. So nowadays the genetics has changed. The concept of genetics has changed now. And I told you one simple word, epigenetic trigger, epigenetics. So you did something upon yourself and created diabetes. Was it with you from birth or by birth? No, for most of the people it is not. So how much genetic or the genetics part played into your life? The changing genetics actually played certain part, not the fixed one. So can you reverse it? If you have got diabetes after you were born, at some stage of your life, you did it, you can reverse it 100%. Gestation, pre-diabetic condition, and there are certain various conditions, like insulin dependent, all those. I'm saying you can revive your pancreas to whatever extent. That depends on how much you work upon yourself. You can strengthen your system. Is it important to strengthen your system if you have lost certain weakness? It is important. You can do whatever else, but the most important thing that you can do with your body is strengthen an aspect which has become weak. Sir, thank you for your knowledge. But, I have many patients who have gestational diabetes, even pregnant ladies, during pregnancy, they get into diabetic stage. So, and, it becomes difficult when they realize it's in the later stages of their pregnancy. So it becomes difficult to control their diet as well as, give proper nourishment to their body as well as them. So how can a pregnant lady, can a pregnant lady do Kumbhak? And plus, there are some child, when I say they're born with diabetes. So how do we, at what age is the right time to start Kumbhak for them? Okay. Pregnant lady get into diabetes. Does pregnant lady get into diabetes or high sugar in blood? Yeah. High sugar in blood, not diabetes. It is not diabetes. You are terming it as diabetes. It is not diabetes, which is actually required by that person. If it goes beyond a certain limit, then we have to control it. Now, in pregnancy, do you want to use something unnatural in the body to control or to block a certain pathway or release a certain pathway? It is not good. So use a natural trigger. This Kumbhak can be done in pregnancy also. Okay. But in pregnancy, it is done in a different way. A pregnant lady, we would not allow a pregnant lady to come in this program. Rather, we will handle pregnancy in a completely different program. Okay. So it can be done in pregnancy. Rather, it has to come in, pitch in. Because in pregnancy, we should not use anything unnatural. No unnatural trigger should be used in the body. Otherwise, what will happen? We will weaken the next generation. That is what has happened. More and more births have become unnatural birth, as well as more and more kids are developing chronic ailments by birth, from birth, or very, very soon after birth. So only thing to stop those aspects is to stop any unnatural trigger on the body and let nature take its own place. For that, we can strengthen this system, and it can happen through natural trigger, which is Kumbhak. Okay. And sir, can Kumbhak have effect on gluconeogenesis? Gluconeogenesis. Can you tell me the meaning of that? I've heard that, but I don't remember that. Sir, it's a cycle in the body where they produce glucose.
basically from any complex. New molecule formation. You're saying new molecule formation. The substrate which we have, which we intake. Okay. I'll tell you in simple. I'll tell everybody so that everybody can understand in simple words. Okay. It is basically absorption. It is fundamentally when the food digests and gets absorbed. So it gets digested and extracted. वो extract हो जाता है ना. That extraction or genesis, you can also call it genesis. But see, every food product has certain carbohydrate. The carbohydrate turns into glucose. You can call it genesis or digestion or absorption. In simple terms, you can understand that. So see what happens. If your absorption is proper, you will extract more and more glucose from the carbohydrate that you have taken in. So extraction more and more carbohydrate is actually good. Or gluconeogenesis has to be very high in the body. So if you measure the health of a system, gluconeogenesis has to have a higher rating. So Kumbhak actually what it does, it enhances gluconeogenesis, but also it enhances the transport mechanism. So what becomes? You overall improve. You digest whatever you eat in a proper way. You extract a lot more from it. You need less food. You will need less food. And your absorption and exchange will become even better so that it doesn't show up in your blood only. It goes in your system and you feel more energetic. So this is what everybody feels the moment they start Kumbhak. Now 100% people say we feel more energetic. We feel more energetic. So gluconeogenesis has also improved, as well as absorption has, or the transport has also improved. Somebody asked, can we... Sir, for a semi-sedentary, sir, excuse me, one last question, please. Please go ahead. Sir, for a semi-sedentary person who is having a semi-sedentary lifestyle, so when the lifestyle is sedentary, they do not use all the glucose produced. As you said that it will enhance the gluconeogenesis, but they do not burn those calories, and these calories ultimately get deposited as fat. So how do you think Kumbhak can help in burning these calories or increasing the metabolism in the body? Okay. Ma'am, we just presented data about weight loss. Yeah. Okay. Now these were thanks to Kumbhak practices. We're not asking them to run around, to jump, go ahead and do gymming, etc. These were thanks to Kumbhak practices. And across our programs, people start reporting either loss first in inches and then in kgs. Okay. Correct. Tell me. I'll tell you how it happens. When you do exercise, what do? You push yourself. You make an effort. By movement or by some kind of weight training or aerobics, you actually make an effort. Here we make an effort by just holding your breath, because in exercise also, in your aerobics also, you are holding your breath to make the effort. But here we are just making the effort. We are using the fundamental mechanism just directly. Yeah. So the sedentary lifestyle people, if they start doing Kumbhak, actually they are doing a lot of exercise without doing exercise. So do you mean that exercise is not needed? Exercise is not needed. In fact, you are doing much more than exercise by doing Kumbhak. आपको बैठे बैठे पसीने अगर लाने हैं तो आप हमारे पास आइए, हम आपको तरीके बताएंगे. कुछ नहीं, बैठे बैठे. Sir, one question. somebody asked कि क्या मैं इसके बाद मिठाई खा सकता हूँ? आपका भी सिस्टम वीक है, आप मिठाई क्यों, आप जब आपके सिस्टम में स्ट्रेंथ बन जाएगी आप जो मर्जी खाइए, पर पहले आपको सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो भी आप खाएंगे जो आपका सिस्टम झेल नहीं पाएगा उसके सिम्टम्स आएंगे, चाहे वो शुगर लेवल पे हो या किसी और फॉर्म में हो. अनदर पर्सन आस्क्ड, क्या मुझे कुंभक जिंदगी भर करना पड़ेगा? अगर आप इससे बाहर आ जाते हैं तो आपको नहीं करना पड़ेगा, और जैसे पहले बोला गया हर किसी को अलग अलग टाइम लगता है. और दूसरा, आपको क्यों करना पड़ेगा अगर दोबारा? ताकि आप बोल रहे हैं कि क्या मैं दोबारा से डायबिटिक कंडीशन में आ जाऊंगा, तो लेट मी
सरप्राइज एवरीवन और rather shock everyone, ये डायबिटीज होती नहीं है, हम करा लेते हैं जाने अनजाने में, ठीक है। ये कोई नहीं अपने आप या कहीं से बाहर से नहीं आती है, ये हमने अपने आप ये हम करा लेते हैं जाने अनजाने में। Okay, so now even if you are able to get yourself back into diabetic condition, at least you know how to come out of it naturally. You don't have to depend on medicine for that. Okay. People are also asking some medical questions. Just genetical testing is helpful for better lifestyle. What should be normal blood level when it is checked by digital glucose meter? Please, a lot of these questions are available in common domain, and if you are consulting a doctor, they will also tell you what is the normal level, etc. Please give us a live example of Kumbhak. I think we gave you 2-3 examples how you use Kumbhak. Now, if you're asking us to show you a practice from the class, sorry, that's not going to happen. I will, and in any case, even if I showed it to you, you will not be able to make out a thing. Let me just do it in front of you, okay? Let me just do it in front of you. One question, sir. So I have done a certain process inside me, but you will not be able to make out because it involves my breath hold and my... Yeah. Diabetic for the last 25 years. Yeah. My HbA1c, pardon me. Sir, your voice is cracking. May I know your name, please? I am Mohan Kumar. Mohan Kumar ji, please go ahead with your question. Your voice was cracking. Please. Is it? Yeah. See, I am... You are 70 years of age and you have 25 years of diabetes, 20, right? 70. Yeah. You have also typed it in the... And HbA1c is about 9.5. Yeah, HbA1c is 9.5. Yeah. So, will it help me? Do you want to come out of it? I'll ask you a question. Do you want to come out of this at this age? Simple yes or no. Tell me. Certainly. Certainly. Are you willing to put in effort on a daily basis to come out of it? Right? Hello? Sure, yes. Sure? Yeah, yes. Yes. Then you can 100%, get yourself out of, since you are at that age, so you can come out of it wonderfully, as in you will first come out of medicine. Now we do not know how exactly your system is. All right. So it might take a longer than, let's say, a person who's younger. Okay. But your life will be much better and you will be able to, lead a much better life as you grow older. 70 years, henceforth. We already have, I think the first example that I presented was of a 65-year-old person, Victor Bischoff. So he's been able to come out of it. So if you are willing to work on your system, learn the practices and do them, you can also come out of it. Okay. Can somebody contact me? Sorry? Yeah, you have, I think you have left your my number in the chat box. So everyone who's interested in joining the program, please leave your numbers in the chat box. Our team will get in touch with you. Okay. And unless we have one more question or not. Mr. Fayaz raised his hand. That was about knowing glucometer, unless he has a thank you, sir. Yeah. Okay. So I think we have told you whatever is possible in a natural way. Chat में जानी कि I want to join the program. Yeah. ले लोगों को contact करेंगे कैसे जरूरत है? Sir, आप अपना number छोड़ दीजिए. People will contact you. There are 4 people over here. There is Ayush, there is Vitika, there is Nidhi. Just leave your number and your name. People will contact you. Himanshu, for example, has left his number. Pallavi Sawant, if you are interested in program, please leave your number. Okay. Kamlesh Kayas, if you are interested in the program, please leave your number. Okay. Kamlesh Kayas, 98241. Excuse me, sir. Yeah. Yeah, Mr. Fayaz.
Yeah, Faiz ji, sorry, आपका मुझे लगा मैंने जवाब दे दिया. Please go ahead with your question. No, actually, I didn't heard your reply. I basically there is heredity in our ancestors are getting diabetic after the age of 40, and I am right now in 42 right now. Professionally, I am an engineer, but still I feel sometimes that I should go for the tests. And last time when I tested and I found 117, but through glucometer. So can you just tell me, is that correct reading or how should I proceed? Glucometer, because usually they say that it should be plus minus 15 or something like that. True or okay. See, there are 2-3 versions available on this on the net itself by medical fraternities. Okay. Some say that your fasting levels should be lower than 100 in the morning. Okay, 100, 110. Others say if 140 below, it is also fine. So the big question is, are you seeing any symptoms within yourself? Okay, symptoms like whether it is frequent urination, something not, some injury, or something that is not repairing itself fast. Are you able to sleep well, sleep on time, wake up on time? Are you feeling lethargic through the day? Do you feel tired through the day? If these are the symptoms, then you maybe it is better instead of so-called depending on just a glucometer, maybe you can go for an HB1AC test that will tell you how your glucose levels have been in the last 3 months. Okay. Maybe get it done from a what you call one of those recognized pathology centers. Okay, sir. Okay, yeah. That's great. Yes, thank you. And don't worry about genetics. When the things that we don't worry about, like about genetics, we change. Oh, thank you. Yes. Including debt. Yeah, so it is possible because, like Rajiv said earlier, we are also our ancestors were not diabetics. Okay, some 100, 200 years back, when they were closer to nature or on natural stuff, they were not diabetics. So this is a recent phenomena. Of course, there's a little relation. I'm not saying there is no relation between genetics and diabetes. There is, but in a family, if there are 5 people, not all of them get diabetic. Not all of them get diabetes. Okay, so a lot of people have left their numbers. Are there more questions that we can answer, or we would like to wrap up the program? Pallavi Sawant, what is your question, ma'am? Please answer my question. Please speak your question, ma'am. In pregnancy, I took 30 insulin till sugar was not in control. I think I have strong insulin resistance, was very restless in pregnancy, had miscarriage unfortunately. Can I cure this condition in next pregnancy? You are actually talking what I was actually telling people. If you take any unnatural, because we have made our life in such a way that from our childhood till our death, we are using only unnatural epigenetic triggers. This will destroy humanity. So, do you really want to correct it? There is something has gone weak inside your system. Something gone weak inside your system. How can you empower that aspect? Do you have anything else apart from Kumbhak? Now tell me, do you have anything else apart from Kumbhak? Because the Kumbhak is not something I am teaching. Kumbhak is the very fundamental strength generating mechanism of your body, mind, of your life. I am just teaching you a particular method which will direct this aspect towards a certain area of weakness. So it can empower that weakness. Yes, Kumbhak can empower any kind of weakness. Time period may vary. Time period may vary. Depending upon how much effort you put, how much destruction you have done to the system. So time period may vary. If you are resilient enough,
If you are committed enough to come out of this, I can tell you, you can come out of death also. So, yes, the answer to your question, Pallavi ji, is yes. If you have time before you plan your next baby, if you are currently on your own, yes, you have a good opportunity to work upon your system, to strengthen it, and ensure that such a condition may not necessarily happen. Now, we are saying that not necessarily happen because we have not seen you or we have not seen you completely or in terms of your diagnosis. Yes, Lakshman ji, the answer to your question is same. Because of absorption and distribution, many people suffer, the effects related to diabetics, one of which impacts our genitals and our reproductive system. So if you're willing to work upon it, yes, once the system is corrected, all these things have a very, very good chance of reviving themselves. Yeah. Okay, once again, please leave your numbers, whoever is interested in either knowing more or actually coming to the program, because we have told you and we've answered questions asked by doctors. Okay. We have answered questions answered by a whole lot of people from various backgrounds, etc., with various complications. So we have literally told you everything about what we do, what we teach. Now the ball is in your court. So come to the program, give yourself a chance to come out of medicine and diabetes. It is ticking away. Trust me, it is ticking away. So don't waste any more time waiting for some miracle to happen, because it won't happen. Only you, there is only one person who can make you come out of diabetes. That is you, not any sarkar, not your parivar, not your loved ones. No, only you, and you can make yourself come out of diabetes. The only thing is you must know how to do the same. We are teaching you those methods. We are teaching this to many people in our current batches. Thank you so much for joining in. Ayush, if you would like to sum up and say something, the camera or the stage is yours. Am I audible? Yep. All right. So I don't need a camera. I just, people who are interested, I just wanted to show you the website wherein you can come on to and you can buy the program. This is the link that you need to click to. If you click on to the link, you would be taken to a payment page, and you can use your credit card, and all it asks is about your name, phone number, email ID, and so on. And this is the form, and you can place your order. This is all you need to do. And about the program, you would get a brief description. The program starts on 6th, as Navneet ji has suggested. Navneet ji has described the classes and so on. Everything is there. If you want that in writing so that you are completely aware of, or if you have forgotten anything, you can again log on to the same page, go to curriculum section, and you can see all of these things, different kinds of sessions, what happens in those sessions. These things are logged. The moment you subscribe and all, it would be made available to you, and through which you can fill in your diagnosis form, for example, and bunch of other stuff that you would get. वो सारी चीजें आपको यहीं से मिल जाएंगी. All of this would be there. Number of sessions, the 4th session is just a suggestive session depending upon your condition and your experience. There could be more sessions as well. प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ में यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें, किस तरह के लोग इसे कर सकते हैं, सारी चीजें सवाल जवाब हुए ही हैं. These are the 4 different kind of things you would get. You would get a WhatsApp group. You can interact within the group, ask your questions. Customized and personalized guidance would be given. The 3 sessions are group session. The 4th session is about personalization, and throughout you would be getting lifestyle guidance. जैसा बता रहे थे नमी जी, तो a lot of people have come out of medication, और ये हमारा फ्री सेशन था अभी इसके बारे में जानकारी के लिए. Any other questions you would have about the program specifically? Logistics के बारे में कि कैसे होगा, क्या होगा, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. पेमेंट वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं. I have shared my number. My name is Ayush.
I've shared my number in the chat box, 9717 333 655. There is a whole, there are several people in the team, Nidhi, I myself, or Vitika. हम तीनों में से anybody could be approaching you, or you could approach them, or let's plan for a better life. That's all. Thank you all. And no other questions, we can conclude this webinar. Thank you. Thanks for joining. हाँ जी, अब तो और कोई नहीं है, हम ही लोग हैं। Yes, sir. Only the team. कहाँ है? वो रिकॉर्डिंग बंद करो। कौन कर रहा है रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग मेरी